गुड आफ्टरनून। आज हमारी फिर से शीट डीआई से रिलेटेड, और इस शीट में वही मेन से रिलेटेड शीट है। और ऑल द डीआईज आर बेहतर अच्छे से हैं। अप्रोच देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। ठीक, इनिशियल टू डीआईज आर इजी वन, बट नेक्स्ट टू डीआईज आर बेहतर डीआईज। ओके, तो फर्स्ट टू डीआईज जो इंक्लूड है इसमें डेटा पर आपको ध्यान देना है। इफ यू ऑब्जर्व डेटा, चलिए शीट पे ही बात करते हैं। The very first question in the sheet is study the following bar diagram carefully and answer the given questions based on it. Bar is given. Following bar diagram shows the power deficit percentage of demand of 14 states of India in the year 2001. Okay. कुछ का डेटा बाय नेम दिया हुआ है, कुछ बाय इन जनरल दिया हुआ है। क्वेश्चंस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जो अननोन है। दिस डेटा रिप्रेजेंट्स ए पावर डेफिसिट परसेंटेज ऑफ डिमांड, मीन्स इन द स्टेट व्हाट इज द डिमांड ऑफ पावर, what may be the demand of power। ठीक, तो जो डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है that shows कि in the particular state what is the percentage deficit of demand, percentage power deficit of demand। It means this data shows कि suppose पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में इफ देयर इज रिक्वायर्ड 100%, देन 97.8% डेटा मतलब पावर सप्लाई हो रही है एंड 2.7% डिक्रीज है। 97.3% डेटा पावर सप्लाई हो रही है एंड 2.7% कम हो रही है। ओके, इसी तरीके से आपको डेटा गिवन है। ओके, तो वेरी फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर सरप्लस इज द हाईएस्ट इन विच स्टेट। पावर सरप्लस मीन्स इन विच स्टेट द डिमांड इज कंप्लीट एंड पावर इज मोर देन द डिमांड। In which state the power is more than the demand highest। Okay, so all these data are positive, shows the positive percentage deficit। It means इन सारे ही states में power demand से कम supply हो रही है and there are only two states, one is Orissa and second one is don't know। Here जो डेफिसिट है इट इज इन नेगेटिव परसेंटेज। इट मींस इन दीज स्टेट्स पावर इज मोर देन द डिमांड। पावर का सरप्लस है, सरप्लस कह लीजिए या पावर का प्रोडक्शन कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, जैसे भी इन दीज टू स्टेट्स इट इज मोर देन द डिमांड। ठीक, आपसे हाईएस्ट पूछा गया, देन हाईएस्ट इट इज इन उड़ीसा। ओके, तो यहाँ पर आपको बस डेटा पे इस बात का ही ध्यान देना है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डीआई। एट फर्स्ट इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए कि व्हाट द डेटा रिप्रेजेंट्स यू। डेटा क्या चीज शो कर रहा है, किस तरीके से शो कर रहा है। ओके,
That is more and more important. Okay? वैसे क्वेश्चंस में इसके अलावा कुछ भी नहीं है. पावर सप्लाई हाईएस्ट इन विच स्टेट? आंसर साफ साफ दिख रहा है. कोई सा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which state the power deficit is the highest? Power deficit is highest in which state? तो दिख रहा है कि वैसे जो भी स्टेट है नाम नहीं पता. तो if it is West Bengal, then answer is this one. If this bar represents West Bengal, then answer is third. Otherwise, answer is none of these, because Orissa and UP are not the answers. Okay? Whatever is the state. तो आप फिलहाल none of these लगा दीजिए, because by name you are given only these names. तो UP और West Bengal का नाम you are not given in the data, then answer is none of these. Okay? Next is at an all India level, unmet power demand is what percent of the total requirement? Suppose there are only 14 states in India. Means ये जो data given है, assume that it is all over India. All the states are given. 14 states are there in India, and as by assuming this, you are asked the level unmet power demand is what percent of total requirement. Unmet means जो भी powers हम deficits हो रही हैं, that total deficit is what percent of total demand. Okay? Now अब ध्यान दीजिएगा, all these data relates to its power demand. All these data जो percentage values given हैं, that is related to the demand of that particular state only, not from India. पंजाब 2.7% का deficit जो है, that is 2.7% of Punjab demand. Rajasthan 3.6% of Rajasthan demand, and we don't know the demand of any of the state. Actual demand of any of the state we don't know, ना ही हमारे पास कोई relation है. Then different values per different percentage work कर रहे हैं, then we can't relate them. Different percentage per different base value पर different percentages work कर रहे हैं, तो we can't relate them in calculation. Then answer is can't say. हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते. Answer should be can't say. Clear है? Next one is, which of the following statement is true? First one is, availability of power in West Bengal is 108.03% of the availability of power in Kerala. जो भी स्टेट है, नाम नहीं दिया गया, बट फर्स्ट में हम फिर से वही बात बोलते हैं जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने लिखी कि वेस्ट बंगाल का रिलेशन हम केरला से नहीं बना सकते, बिकॉज वी डोंट नो द बेस वैल्यू ऑफ वेस्ट बंगाल और केरला. किसी की भी डिमांड हमारे पास गिवन नहीं है, देन वी कांट रिलेट दैट. ओके. सेकंड वन, among the given states ratio of demand and availability of power is the highest for Orissa. ठीक है, दिख रहा है तो ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी पर बेस्ड था. थर्ड वन इज, among the given states the ratio of demand and availability of power is the highest for UP.
जब सेकेंड वन अगर ट्रू है तो थर्ड वन अपने आप गलत हो गया। दूसरा इस दो डिमांड एंड अवेलेबिलिटी का स्ट्रिंग वैल्यूज का रेशियो उड़ीसा के लिए सबसे ज़्यादा है। ओके, तो यूपी के लिए मैक्सिमम नहीं हो सकता। एनफोर्समेंट अवेलेबिलिटी पावर इन राजस्थान इज 103.65% ऑफ दैट इन बिहार। सेम बात फर्स्ट ऑप्शन की ही सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है। वी कांट रिलेट टू डिफरेंट स्टेट्स बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द स्टेट्स। ठीक, चलिए वहाँ की वेस्ट बंगाल और केरला तो हमको प्रॉपर बताया नहीं गया था, बट राजस्थान और बिहार हमको क्लियर पता है, राजस्थान और बिहार ये है। बट हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ पावर की। तो इन राजस्थान अवेलेबिलिटी इज 96.4% and in Bihar it is 93%, but 96.4% of what, इसके बेस बिल्कुल अलग एंड 93% ऑफ व्हाट, उसका बेस बिल्कुल अलग। ठीक, देन when we don't have base values we can't relate the percentage। ठीक, तो फर्स्ट फोर्थ थर्ड तीनों ही गलत दिख रहे हैं, आंसर इज सेकंड। ओके, इस पूरी ही डे में कुछ भी वैसे नहीं, बट आपको डेटा पर ध्यान देना है कि हाउ डेटा रिप्रेजेंट्स इन द डाटा। ओके, नेक्स्ट वन इज question is the demand of power in Andhra Pradesh and Gujarat are equal, then availability of power in Gujarat is what percent of that in AP। अब यहाँ पर हमने डिमांड्स को रिलेट कर दिया, गिवन है इक्वल। ठीक, देन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर in Gujarat is what percent of in Andhra। ठीक, तो एपी का डेटा ये है, गुजरात का डेटा ये है। एपी में टोटल अवेलेबिलिटी है 92.2%। ठीक, एंड गुजरात में अवेलेबिलिटी आपकी होगी 90.3%। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम बोलें कि ऑफ व्हाट, तो बेस इन बोथ द केसेस आर इक्वल। अब हम 100 एज्यूम कर लेते हैं कि 100% इसको चाहिए तो 100% ही गुजरात में रिक्वायर्ड है। एपी में अवेलेबिलिटी है 92.2%, गुजरात में अवेलेबिलिटी है 90.3%। ठीक, देन यू आर आस्क्ड गुजरात इज व्हाट परसेंट ऑफ आंध्रा। ठीक, तो we have to calculate 90.3 is what percent of 92.2। ओके, हमको पता है कि ये जो कैलकुलेशन आएगा ये डेफिनेटली लेस देन 100 होगा, क्योंकि बेस इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू। ओके, then answer is definitely none of these। अगर ये ऑप्शंस हैं तो ठीक है, ये हो नहीं सकता, इसके होने का कोई चांस नहीं, आंसर नन ऑफ दिस। ओके, बाकी आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेशन के लिए हम एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस केस में हमको पता है बोथ द वैल्यूज आर वेरी क्लोज, देन हम सिर्फ ये देखते हैं कि दिस इज व्हाट परसेंट लेस देन बेस। ठीक, तो इसको अगर हम करेंगे तो दिस इज 2.2 2.2
1.9 is what percent of 92.2? 10%, 1%, 1% is 0.922 और हमको रिलेट करना है इतना, तो 0.9 is 1%, then this is around 2%. ठीक, तो जो हमारा आंसर होगा वो 98% के अराउंड ही होगा। ठीक, तो वो फिर हमको ऑप्शन में देखना है, बट यहाँ पर हमको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आंसर इज डेफिनेटली 4। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन में दो बातें ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन, व्हाट डेटा रिप्रेजेंट्स, व्हाट गिवन डेटा, किस तरीके की वैल्यूज गिवन है, क्या गिवन है, एक्चुअली व्हाट डेटा शोज। ओके, वेरी फर्स्ट थिंग, इसको क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चंस पढ़ जाइए। एंड व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे बेहतर मतलब जरूरत ये होती है, सबसे बड़ी जरूरत होती है, दैट इज योर कैलकुलेशन। आप कितना स्पीडी, कितना फास्ट, कितना स्पीडी कर सकते हैं, कितना एक्यूरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको तरीके, मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट DI, इट आल्सो सिर्फ ओनली बेस्ड ऑन डेटा। इसको भी मैंने सिर्फ इसीलिए शीट में अभी आज रखा हुआ है कि हाउ सच डेटा, हाउ वी कैप्चर द डेटा फ्रॉम द गिवन, जो भी what we are required, how we calculate it, how we take it from the data. Okay, the very first here we are given the table given below shows a frequency distribution of the lifetime of 1400 radio tubes tested at TLM tube company. Okay, so these are lifetime of tubes, these are number of tubes from 100 to 99, 150, 200 to 299, 170, इस तरीके से you are given total 1400 data. Clear? The very first question is the percentage of tubes lifetime of which does not exceed 800 hours is. Percentage of tubes lifetime of which does not exceed 800 hours is. 800 hours का डेटा यहां से स्टार्ट होता है। All these have the lifetime more than 800 hours, and all these data has the lifetime less than 800 hours. So we have to calculate sum of this is what percent of 1400. Simple that. 20, 30, 13, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 9, 3, 6, 7, 8, 9. जीरो 5, 0, 1 जो हमारा टोटल आया था 10, 20, 20, 10, 30, 30, 39, 39, 140, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 3, 10, total 1000. 1000 upon 1400 into 100. Okay. We have to calculate basically 5 upon 7.
1/7 की वैल्यू आपकी होती है 14.28, देन 5/7 आपका होगा 71.42। डेफिनेटली क्लियर। तो सिंपल सा कैलकुलेशंस हैं, और कुछ भी विशेष नहीं है। नेक्स्ट वन इज the percentage of tubes lifetime of which is greater than or equal to 800 hours, either greater or equal to 800 hours is। तो सिंपल सर ये अगर इसको हम करें तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वी हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू इन द लास्ट क्वेश्चन, and in that question we calculated less than 800, the percentage of that tubes that have lifetime less than 800 hours. Here we have to calculate more than or equal to 800, more than or equal to 800 hours। then डेफिनेट सी बात है कि टोटल 100 जिसमें से ये वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट ही कर ली थी, तो 100 माइनस दिस विल बी आंसर, आंसर इज दिस। ओके, ग्रेट। Next is the percentage of tubes lifetime of which is at least 300 hours but less than 900 hours. At least 300 and less than 900 means between 300 to 900. Okay. So more than 300 or more than 300 to up to 900. So up to 900 from up to here, and more than 300 from here. So we have to calculate this one. 140, 140, 140, 280, 280, 280, 380, 480, 480 plus 80, 560 is what percent of 1400? Exact 40%. More than 300, कुछ नहीं लगती। 0, 5, 5, 10, 1, 10, 10, 20, 24, 24 और 8 भी आएगा। 24.8, 32, 3, 6, 7, 8, 836. 820 is what percent of 1400? This we have to calculate. 0 खत्म कर दीजिए 100 से, सिंपल सा डिवाइड कर दिए, 1484 12 70, 12 120, so that takes 58 point something, answer is second. Okay. Next is the ratio of tubes lifetime of which is below 400 hours to those above 600 hours. Below 400 from below 400 up to here, and more than 600 above 600, this one, ये डेटा आपका है 300, 200, 500, और this data is 140, 140, 140, 280, 280, 480, 280, 280, 200, 480, 480 plus 60, 540.
The ratio is 25:27. Okay, this one is easy one. This DI is important or better DI. In this DI, at first we look in how data is given. Data is coach John sat with the scorecard of Indian players from the three games in a one-day cricket tournament where the same set of players played for India. मैच में टीम एक ही थी and all the major batsmen got out. सब में जो मेजर बैट्समैन थे वो आउट हुए. John summarized the batting performance through three diagrams, one for each game. Pakistan, South Africa, Australia. In each diagram, the three outer triangles communicate the number of runs scored by three top scorers from India, where K, R, S, V and Y represents Kaf, Rahul, Saurav, Virender and Yuvraj. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yuvraj respectively. The middle triangle in each diagram denotes the percentage of total scores that were scored by the top three batsmen, Indian scorers in that game. These are the top scorers in each game, and the total of these total runs of these three batsmen is the percentage score of total team. This percentage score of total team. No two players scored the same number of runs in the same game. John also calculated the two batting indices for each player based on his scores in the tournament. The R index of a batsman is the difference between his highest and lowest score in three games. R index is this one. The maximum score and minimum score of all these batsmen in three games. And while the M index is the middle number if his scores are arranged in a non-increasing order. Means as it is, अगर हम number रखते हैं, then middle number is the M index. Okay, डेटा क्लियर हो गया होगा. ट्रायंगुलर फॉर्म में ये गिवन है. Each triangle has four parts. The outer three triangles shows the maximum scorer of the match, and they scored total percentage, this percentage in the middle triangle, this percentage of score of the total team. ओके, तो यहाँ पर हम एक बार टोटल स्कोर भी कवर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इन द फर्स्ट फ्रॉम अगेंस्ट पाकिस्तान, वीरेंद्र मेक्स 130 रन्स, युवराज 40 एंड काफ 28. 170, 170, 28, 198. 198 is the 90% of the team. 198 runs is the 90% of the total score. It means total score is 220.
220. Here against South Africa, Saurav scores 75, CAF 51, Rahul 49, and the total score 100, 175. That is 70% of the total score. If it is 70% of total, means 100% is 250. Okay. And against Australia, Yuvraj score 87, Saurav 50, Rahul 55. 105, 105 and 85, 190, 192. 192 is the 80% of the total score. 192 is 80% of total score. Then total score is 240. 240. So these are the total scores against each team. Clear? Now, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं. Given है, how many players among those listed definitely scored less than Yuvraj in the tournament? How many players among those listed definitely scored less than Yuvraj in the tournament? In 3 games की बात हो रही है. In all the 3 games, Yuvraj score is more than the scores of how many players definitely. So we are given 2 data of Yuvraj, first and third, 87 and 40. So Yuvraj का score 87 plus 40 तो होगा ही, means 127 तो है ही. अब इसके बाद थर्ड गेम में हाउ मच युवराज स्कोर, हमारे पास डेटा नहीं है. बट इफ वी एज्यूम दैट ऑल द टीम एक्सेप्ट three players, these and one is Yuvraj, these 4 players scored all the total. But in this case, Yuvraj cannot score more than 48 because Rahul scored 49 and these 3 are the top scorers. It means Yuvraj scored less than 49. So at least 48, maximum 48 स्कोर किया जा सकता है युवराज का. ठीक है, चलिए उसकी बात अभी हम नहीं करते हैं. हम ये देखते हैं कि रिमेनिंग प्लेयर्स में किसकी वैल्यू कम हो सकती है. डेफिनेटली तो हम ये मान लेते हैं कि सपोज युवराज आउट एट 0 इन दिस गेम, सेकेंड गेम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट युवराज बोल्ड एट 0. ठीक, तो इट मींस युवराज हैड स्कोर्ड only 127 runs in all the 3 matches. Virender scored 130 in against Pakistan. It means कि हमको इसको तो अलग ही कर देना है कि इसका इंडिविजुअल स्कोर इज ग्रेटर देन 127. नाउ कैफ की अगर हम बात करते हैं, कैफ स्कोर्ड 51 एंड 28. 51 28 this is 79. कैफ ने in 2 matches कैफ scored 79 and against Australia कैफ can score
maximum 49 runs because 50 is here, 50 score नहीं किया है, it means maximum 49, and if we add 49 in this value so we get 80, 81, 28. Rahul 49, 55, 50, 50, 104. राहुल को अगर हम कैलकुलेट करें तो इन 2 मैचेस राहुल स्कोर्ड 104 रन. ओके, एंड अगेंस्ट पाकिस्तान राहुल कैन स्कोर मैक्सिमम 27. ओके, तो इट इज अगेन मोर देन 127. ये भी आंसर नहीं हो सकता. बचता है सौरभ 75, 50, 125, 125. हम 2 रन भी अगर एक्स्ट्रा ले लें तो मोर देन इसके आगे निकल गए. तो इट मीन्स कि हम डेफिनेट फॉर्म में हम कुछ नहीं बोल सकते कि हाउ मच प्लेयर स्कोर्ड लेस देन युवराज. ठीक है. ओके, all the calculation depends on assumption. ठीक, we have data of any player in 2 batches, confirmed data of any player in 2 matches. ठीक, in 3rd match we have to assume. okay, तो assumption में हम बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर के एजम्पशन करते हैं, ठीक, किनारे पर. ठीक, और उस केस में जो चीज डेफिनेट है वो डेफिनेट होगी, अदरवाइज डेफिनेट नहीं होगी. तो यहां पर आंसर शुड बी फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मी. ओके, नेक्स्ट वन. इस टाइप का जब डीआई इनकेस अगर आपको मिलता है तो इट इज based on reasoning, logic, assumption and calculation too. ठीक है. तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके ही क्वेश्चंस पर वर्क करना है. नेक्स्ट वन इज तो 220, 250, 240. Next one is which of the player had best M index from the tournament? Which of the player had the best M index? सॉरी, जगह पर गलत नहीं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. इसमें आंसर 1 आएगा, नहीं आएगा. 49, 50, 104, 104 and 22, 126. Answer is definitely Rahul in this case. इसमें एक बार फिर से इसको देखिएगा, अभी मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया इसलिए बोल रहा हूँ कि युवराज वी स्कोर्ड 127. राहुल की अगर हम बात करते हैं तो राहुल हैज स्कोर्ड टोटल इन 2 मैचेस 104. ओके, एंड हियर टोटल स्कोर इज 220. And 220 is 100% and 90% is scored by these 3 batsmen. Then your 4th batsman, if we assume that the 4th batsman scored the remaining runs, then 10% of this value.
टोटल स्कोर का 10% ही स्कोर होगा। देन 10% वैल्यू हमको मिलती है 22। इट मींस whatever is the fourth batsman, if we assume that fourth batsman scored the remaining runs, so he can score 22 runs maximum. Or suppose it is Rahul, then Rahul can score 22 more than 126 runs, and it इससे ज्यादा राहुल का टोटल इन 3 मैचेस नहीं हो सकता, देन डेफिनेटली राहुल इज लेस देन युवराज 101%। ओके, बाकी 125 125 तो ये तो हो ही जाएगा। कैफ 48 79 कैफ की अगर हम बात करें, कैफ 79 प्लस रिमेनिंग 20% 48 80 127 लेस नहीं, इक्वल केस में रहेगा, एंड आंसर इज ओनली 1। सौरभ डेफिनेटली नहीं होगा, वीरेंद्र है ही नहीं, राहुल इज लेस देन युवराज डेफिनेटली, आंसर इज सेकंड। ओके, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा करिए। नेक्स्ट वन इज next question is, which of the players had the best M index from the tournament? Best M index. M index is the middle number. Okay. So युवराज यहाँ टोटल स्कोर था आपका 250, रिमेनिंग 30% की बात अगर हम करें तो 30% इज 75, and CAF 20% is 48, and Saurav 220 and 10% 22, राहुल अगेन 20। तो चलिए, एम इंडेक्स जो हमने डिफाइन किया हुआ था, एम इंडेक्स इज द मिडिल नंबर इफ हिज स्कोर आर अरेंज इन अ नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस जैसा है बिल्कुल वैसे रखते हैं। तो युवराज की अगर बात करते हैं, युवराज 40 75 एंड 48 यानी 87, it means Yuvraj has 40 M index, Rahul एंड सौरभ दोनों के लिए ही आपका एक ही इंडेक्स बनता है 22, बिकॉज मिडिल में यही आएगा। इन केस ऑफ राहुल 22 इज द मिडिल नंबर, एंड इन केस ऑफ सौरभ 22 is the middle number, एंड इसके बाद हम कैफ की बात करते हैं तो कैफ आपका आएगा 28 51 एंड 48। That case 48 48
here one thing Vishesh. M index is the middle number if his scores are arranged in a non-increasing order. Means in that case you can say the score of South Africa मिडिल मैच है, मिडिल नंबर यही होगा. यहाँ पर 75 नहीं हो सकता, सॉरी युवराज की अगर हम बात करते हैं, युवराज इज 40. इन दिस केस इट मैक्सिमम it should be 48 and in this case it is 87. फिर कैफ की बात करते हैं, 28, 51 and 48 मैक्सिमम. राहुल की बात करते हैं तो 22, स्कोर नहीं हो सकता, 49 एंड 55. सौरभ की बात करें, 22, 75, 50. Now, is according to this data and according to the given language, M index is the middle number if his scores are arranged in a non-increasing order. Non-increasing order means जैसा स्कोर किया हुआ है अगर हम वैसा ही अरेंज करते हैं, फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, थर्ड मैच, then the middle number is our answer. In that case, answer is Saurabh only. He scored 75 runs in means South Africa. Okay. ये आपका ऐसे ही होगा. नेक्स्ट इज for how many players is it possible to calculate the exact M index? Exact M index हम सिर्फ और सिर्फ मिडिल, जो मिडिल गेम है उसके इस कंफर्म स्कोर्स का ही M इंडेक्स हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज M इंडेक्स इज द मिडिल नंबर. M index is the middle number and middle number is the middle game. Okay, or middle in second game against South Africa we have the confirmed value of Kaif, Saurabh and Rahul. तो जो भी हम M इंडेक्स की बात करते हैं तो M इंडेक्स सिर्फ इन तीन प्लेयर्स का ही डेटा हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है, देन वी कैन कैलकुलेट this only. The answer is more than 2. Okay. Next is among the players mentioned who can have the lowest R index from the tournament. Lowest R index from the tournament. Lowest R index is
difference between highest and lowest score. कैफ राहुल युवराज, कल इन तीन की ही बात करी गई है, हम भी इन तीन की ही बात करते हैं। कैफ मैक्सिमम 51, लोएस्ट मे बी, बट ये मे बी वाला केस है, ठीक। लोएस्ट 28, अगर हम इसको जीरो नहीं मानते, इफ यू एज्यूम इट 0, तो 51 0, युवराज 87 40, in this match it should be 48 or 0. Lowest R index, sorry, we have to calculate lowest R index, sorry, फिर से बोलो, तो lowest R index means difference between highest and lowest should be कम से कम, ठीक। तो हम अगर इफ वी एज्यूम कैफ हियर 0, तो हमारा लोएस्ट इंडेक्स जो है वो 51 हो जाता है, बट वी हैव टू कंफर्म डेटा ऑफ कैफ 51 and 28, तो वी एज्यूम दैट he scores more than 28 in this match, then lowest index में भी कैफ के लिए 23, ठीक। युवराज 87 40, तो डिफरेंसेस अगर हम इसको लोएस्ट माने, इसको हाईएस्ट माने, तो 47 युवराज के लिए। राहुल की अगर हम बात करते हैं तो 55 49। In this match he scored maximum 22. If we definitely बात है, राहुल एंड सौरभ both have minimum score in this match, तो डिफरेंस राहुल के लिए आपका हो जाएगा 55 minus 22 33, ठीक। एंड सौरभ के लिए अगर देखिए तो 75 and 22, कुछ भी आप ले सकते हैं। देन only Caf is the batsman that can have the lowest R index, okay, answer is only Caf, okay। Next data we have the figure shows the distance time graph of three persons A, B and C. Time, distance, okay. Then we are given three graphs of A, B and C. A is this one, B this one and C this one, okay. X-axis shows the time, at what time, and this shows, y-axis shows the time. So from both the axes we can find, yeah, from graph line we can find at what time the person is where, okay। तो क्वेश्चंस आपको कहीं डेटा नहीं गिवन है, बट क्वेश्चंस इस पर बेस हैं, तो
डेटा दिया है, बहुत अच्छा सा दिया है, ध्यान दीजिएगा इस पर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट, ए एंड सी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस। ए एंड सी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस। A and B started from the same place. B and C started from the same place. A, B and C started from the different places. None of these. चलिए देखिए, when A started, the distance is 0 at 8 o'clock, and when C started at 8:40, the distance is 0. So we can say, and B started at 8 o'clock at the distance 60, means from where the A started at 8 o'clock, from where the A started, B started 60 किलोमीटर दूर from any place. ठीक, तो we can simply देख सकते हैं ऑप्शन में कि A and C started from the same place. This one is true. And there is first. Okay. Next one is, who had the greatest speed at 8 am? Who had the greatest speed at 8 am? Okay. At 8 am, C तो है नहीं डेटा में, only we have A and B, but this y-axis या ये ग्राफ मतलब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ A इज 0 एंड B इज 60 किलोमीटर अवे, एंड बोथ स्टार्टेड at 8 am. ठीक, तो we can't say कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, बिकॉज according to data A and B both started at 8 am. हमारा डेटा ही यहीं से शुरू हो रहा है, then we can't tell the speed. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम हमारे पास यहाँ पर है नहीं, दोनों के लिए जीरो का टाइम है। जीरो का टाइम है, वी कांट कैलकुलेट स्पीड। आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट, हु हैड द ग्रेटेस्ट स्पीड एट 9:05 PM? 9 o'clock ही देख लेते हैं। तो एट 9 o'clock from 8 to 9, A covered 0 to 60 around. A covered from 8 to 9, 60 distance 60 kilometer. Okay. B covered from 60 to 110. Is it okay? B covered from 60 to 110, 50 kilometer, and C covered from 0 to 50 within 20 minutes. C covered the distance 0 to 50 within 20 minutes from 8:40 to 9. So within 20 minutes C covers 0 to 50 kilometer at month. It means the speed at 9:05 am is the most for C. Okay, less time, ज़्यादा distance, speed is definitely ज़्यादा. Next.
C overtake A at a distance of 40 km from the origin at 8:40 am. At a distance of 75 km from the origin at 9:10 am. Third, at a distance of 125 km from the origin at 9:30 am. At a distance of 150 km from the origin at 9:40 am. So देखिए, C cross C and A both are together here. Then after A in the slower speed covers the distance, and C less time, more distance. At this place C crossed A. तो distance की अगर हम बात करें तो it is at 75 km. Okay, distance is 75 km, and option is second, at a distance of 75 km from the origin at 9:10 am. Okay. Next one is C overtake A. Next is, how long should C wait at the destination for B to arrive? C reached the destination, whatever it is, at 9:40. C reached the destination at 9:40 and B reached at 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 25 मिनट यहाँ पर हमारा 10:05 पर. B reached the destination at 10:05. C 9:40, B 10:05. It means C have to wait for 25 minutes. Okay. When C overtake B, approximately how far is A from the origin? When C overtake B, when C overtake B, C overtakes B here, at that time, how far is A from the origin? Origin 0 and A's the position is around 95 approximately बोला गया है. Answer is 97. ठीक. Any doubt? Next is what distance did C cover between the instants he passed A and B? When C crosses A and B, the distance between the 2 points. So C crosses A at 75 and C crosses B at 125 around. What distance did C cover between the instants he passed A and B? At 75 C crossed A and at 125 C crossed B. Then the distance between them is 50. Answer is second. Okay.
Next is who was ahead of the other two at 8:50 am. At 8:50, at this distance, who was ahead of the other two at 8:50. C is at the distance of 30, A is at the distance of 60, 50, 60 के बीच में, and B is तब से आगे, तो B ने स्टार्ट किया था 60 किलोमीटर आगे से. It means B is ahead of both A and C at 8:50 am. Answer is B. Okay. From the graph, what is the speed of C? C reached from 0 to 150. 150 from 0 to 150 within 1 hour. From 8:40 he starts and at 9:40 he reached the destination. So within an hour he covered the distance 150 kilometer. Okay. So answer is 150 की distance 1 hour में cover हुई है. Answer is third one. Okay. From the graph, what is the speed of B? B covered the distance from 60 to 150, 90 kilometer within from 8 to 10:5. So B covers the distance 90 kilometer in 8 to 10:5. 2 hours 5 minutes means 2 whole number 1 by 12 hours. Okay, 25 by 12. Let's say 90 into 12 upon 25. B's answer is 43.2 kilometer. Okay. Last question is who among the three moved the uniform speed throughout? Distance proper cover हुई है, straight line given है. It means all covered the distance with a uniform speed. ठीक, because किसी भी instant पर distance zero नहीं दी हुई. ठीक, answer is fourth one. A, B and C all. ठीक, so these are different types of DI. अभी मैं कराऊंगा कई, देखिएगा. Tomorrow again there will be a sheet of DI, or most probably the sheet is of missing DI. ठीक, आज के लिए इतना ही. बाय, कल फिर मिलेंगे.